No idea, I guess. So let's discuss whatever tenses we have learned so far on a timeline so that you will know what is the gap that we still remaining so that you can fill that for me. What have we covered present tense already? Yes. Have we covered future? Yes. What kind of tenses have we covered? F1 and F2 we have covered. What are F1 and F2? Future antérieur, future F2. simple. Yes. Aishwarya, which one is future anterior? Which one is future sample? F2 is future anterior and Mm-hmm. F1 is future sampler. Yeah, okay. And in the past, what have we covered? This is for future. What is in the past? Passé composé Passé composé, très bien. Passé and composé. imparfait. Imparfait, okay. I'm gonna draw a big timeline, okay, and imperfect. I don't know what this is. There's a lag in my pen today, even to me. But okay, imperfect. And what other tenses have we covered? We covered, I guess, two more tenses. Futur proche Future proche, très bien, and passé récent. and passé récent. Okay, PR. I'm writing PR for now. So these are the tenses. अभी देखो जैसे future में there are two tenses to describe two kinds of events. If there are two events happening one after the other, have we done something similar for the past? No. What if there was an action which was there were two actions, okay? ठीक है? And one of them happened before the first one happened, and both of them were short. They ended like they satisfy all the conditions for passé composé. Will you use passé composé for both of them? I'll give you example. She called when I arrived. That's like an example of simultaneity. Simultaneity समझते हो? Timeline पे देखो, ठीक है? Event 1 happened when event 2 happened. She called on the exact moment when I arrived home. ठीक है? Hmm. Yes. Right. For Yes. example, now I want to talk about an event. She ate when I arrived. But the problem is इस sentence में मैं गलत ही बोल रहा हूँ. मैं बोलना चाह रहा हूँ the intention is to speak. उसने खाना खा लिया था जब मैं पहुंचा. How will I say that using the past tenses that we know already? imperfect पता है हमें, passive composite पता है हमें. एक ही sentence में इसको ऐसे कैसे बोलेंगे? उसने So खाना खा लिया था. uh, Continue. the sentence is he or she already ate dinner when Yeah, you arrived. yeah. So English में इसको कैसे बोलते हैं? Just think of it. English में how will you say this? You use the same tense that we are going to learn today in English as well. Run your neurons. Oui. I think it'll be he already ate dinner when you arrived. Well, the use of already is not allowed. Okay. How will you say He that? had dinner when you arrived. नहीं, बट इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसको ट्रांसलेट करो. He had dinner when you arrived. इसका मतलब तो है ना he was having dinner when you arrived. Hmm. बट उसने पहले ही खा के रखा हुआ था. Finished. Before you actually arrived, he had finished the dinner. तो he had eaten the dinner, his Okay. dinner before you arrived. So had eaten. देखो दो words है इसमें. Ate versus had eaten, right? अच्छा मैं eaten भूल गई थी. Shalu, any doubts? No, sir. Can you form a sentence with another scenario? For example, he had done his homework when the teacher asked for it. When I called. उसने होमवर्क पहले से कर लिया था टीचर के बोलने से पहले. टीचर के होमवर्क मांगने से पहले उसने पहले ही होमवर्क करके रख लिया था. So are these events simultaneously occurring or they are one after the other? One is before and one is after. Right.
Is yes or no? I mean, is that the case or no? Yes. Are you able to understand? What did I say? Yes, sir. Hello? Okay, can you repeat it to me? Yes, sir. What is the use case that we're discussing? Like, Plus-que-parfait? This is no, the sentence we discussed. He had already done his homework before Okay. the teacher asked for it. Are Ask you for it. understanding that there are two events, E1 and E2, which are happening? One is before, and the other one is after. Both of them are not occurring simultaneously. After. Yes. 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 Okay. Very yeah. So this is the use case where we are going to use a new tense which we have not learned so far, and I think there's a lag in my voice reaching Shalu, I guess, and yours reaching mine. Aishwarya, is that the case? Not for me. Not from okay. Okay, then I think it's Shalu. Can you please check your connection? All right. Uh, We'll move forward. So Sir, it's fine, but I don't know. Earlier also, it happens with me in the Google Meet. okay, no worries. We'll try to not let it affect the class. All right. So we have two events. Okay. Again, as I'm repeating it again and again. Aishwarya, can you repeat the use case on which? What is the use case for the new tense that we're going to learn? So two events happening simultaneously, before and one is after. That is No. not simultaneously. No. The simultaneous का definition is they happen at the exact same moment, and उसके लिए we have entirely different thing in French, and we will learn that later. Okay, so two events happening, one is before, the other one is after. Yes, and in which tense? Past Past tense. tense. Past में, ठीक है? So we're talking about past, ठीक है? Past में two events, if they're not happening at the same time, we are going to learn which tense is going to be used for which one, ठीक है? Hmm. There's of course a new tense that we're going to learn today. ऐसे मैं बताता हूँ. एक new tense है INT और एक past से compose है. अब I don't know past से compose मैं किसके लिए use करूँगा? 1, 2 and 3. अब देखो अगर मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, sorry, just take 1 and 2. Is that the case कि new tense से पहले आएगा past से compose या new tense जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसके बाद आएगा past से compose? Is the meaning clear as to what I'm saying? There are two events, ठीक है? अब उनमें से जैसे हमने फ्यूचर में किया था Hmm. F1 F2 थे, Hmm. right? F1 F2 में we had to place two tenses that we learned. One was future sample and one was future anterior. Hmm. Yes. The same way we have to place two tenses in the two events that are happening in the past this time, ठीक है? P1 P2 मान लो. तो वो events में कौन सा tense किसके लिए applicable होगा वो हम आज सीखेंगे, ठीक है? And it's very Okay. simple. Yes. Nothing more. So I'll tell you, Plus-que-parfait is used for an event which is actually happening before a past event. Okay? And this event, whichever it is, it will be either passé composé or imparfait, whatever is the case. Okay? Okay. Shalu, can you repeat this to me? What is the use case? Uh, so like the first case will be used for the first case will be Plus-que-parfait, and the Devi? event happening after will be passé composé or like any other imparfait. Yeah, yes, that's correct. Okay? All right. Okay. Is there any doubts so far? No. Okay, très bien. And Shalu, this is called Plus-que-parfait, not Plus-que-parfait, okay? We speak the S in this. Right. Plus. Okay. So यहाँ पे देखो, let's read it out. Aishwarya, can you read this out for me, please? The first line. Yes. The Plus-que-parfait indicates a past action that happened before another past action started, in English, had done. It can be seen as past tense. समझ रहे हो? Past of past is for Plus-que-parfait, is dedicated for Plus-que-parfait, is what he is just saying. So there's one another indicator. वो ये बोल रहा है कि this action is described by Plus-que-parfait if it's happening before another action which starts later. ठीक है? ये ध्यान रखना है.
स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे इवेंट का बाद में होना चाहिए, बिफोर दिस एक्शन एक्चुअली हैपेंड। वो खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होना होगा। दैट्स द फुल कंडीशन। ठीक है, ओके très bien। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लस-के-पारफे इज वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी लर्नड इट, यू जस्ट नीड टू पुट टू पीसेस टुगेदर, जो तुम लोगों ने पहले सीखे। ठीक है, एंड a lot of the tenses that we नहीं, this is the tense जो तुम्हें पहले से आता है। Let's see again, this is a complex tense। What is complex tense in French? Made of two parts. Made of two parts, très bien, okay। And what are those two parts generally in French, Aishwarya? The the verb and the auxiliary verb. Sorry, the auxiliary verb and the participe passé. यस, सो ऑक्सिलरी एंड पार्टिसिप पासे। तो यहाँ पे देखो, पार्टिसिप पासे मैंने पहले भी बताया था 7th चैप्टर में, व्हेन यू आर रीडिंग पासे कंपोजिट, दैट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अदर टेंसेस। ठीक है, so every rule that we learned for passive composite or past participle in passive composite are going to be the same। तो past participle तो मैं already आता है, I don't need to learn new things here। ठीक है, the thing we are concerned about is auxiliary। ठीक है, अभी remind me शालू, what is the tense in which auxiliary is conjugated in plus in passive composite? How do we conjugate auxiliary in passive composite? In passive composite, that Hmm. is the like conjugation of être or avoir in the present tense. Like In the present tense, okay, très bien, yeah, that's it। yes, And Aishwarya, remind me, what is the conjugation of auxiliary in future anterior? Uh, it's I think wait, I forgot. No worries. What the hint is, what tense we read it with? That's the This is also avoir and être only. avoir and être, but in which tense? That's important. Auxiliary is always going to be avoir or être in French, okay? So, but the definition changes by the tense it is conjugated in. So you need to know what tense is it conjugated in future anterior. What is it? Future Take simple. future simple, yes. And what are the conjugations of avoir and être in future simple? Shalu, can you remind us? What is the conjugation for être? for être. Okay, it's Hmm. et ai Je से start करो, je। ais. No, 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 not the endings, just the Oh no conjugation for no être. How no will I no no say? no sorry sorry I sorry sorry will. sorry. I remembered. I remembered. Je serai. Je serai. Très bien। And tu, पूरा बोल दो। Tu, il est long। Okay. Je serai, tu seras, elle sera, nous Mhm. serons, vous serez, elles seront. Très bien। And Aishwarya, what's the conjugation with avoir or future simple? J'aurai, Très bien. Ok, j'aurai. j'aura, Tu auras. tu auras, Oui, elle aura, oui. nous aurions, Auront. auront, vous Auront. aurez, Oui, and elles auront. auront। Très bien। ठीक है, एंड लास्ट एक रिवाइज कर लेते हैं, आले। आई टोल्ड यू yesterday कि these are the only three important ones, मतलब सबसे important है, सबसे irregular है। You won't be able to guess it if you don't know it। So what is the conjugation for ale? I will go। je plus blah blah J'irai. blah, you have to fill that। J'irai, j'irai, ठीक है, याद रखना। tu iras, il ira, nous irons, and vous irez, vous irez, ils iront। ठीक iront. है, अब you have to remind me again, what is the conjugation of imparfait in with être and avoir? imparfait, याद है imparfait पढ़ा था थोड़ी वेग मेमोरी से? Yes. Okay, très bien। How do we conjugate uh, avoir and être in imparfait? être बताओ पहले, कोई दोनों में से एक। J'étais, tu étais, j'étais, très bien, elle oui। était, nous Mhm. étions, vous étiez, elles
Zété. Oui, très bien. And Shreya, what is the for conjugation in imparfait for avoir? Um, we don't change it, right? It remains at it does not, like, it's not AUR, right? No, we don't. No, right? imparfait में नहीं है वो. That ठीक है, okay. AUR, IR and जो सरे वाला है, तीनों के वो तीनों सिर्फ future में आए. And one tense we're going to learn later. Conditional उसमें होगा, but not here. so it's Jave, J'avais, très bien. tu ave, Oui, il ave, oui, nous avions, oui. vous Avion, aviez, aviez, yes. and elle aviez. Ave, simply Ave. ave. We Yeah. don't change the pronunciation, okay? très bien. तो तुम्हें देखो already आता है avoir être का conjugation in imparfait. Plus-que-parfait is just a mixture of imparfait and past participle. Simple as that. ठीक है? तो यहाँ पे जो auxiliary है, अभी मैंने इतना सारा इसलिए रिवाइज कराया so that you actually know the difference between the tenses that we are learning. खिचड़ी मत पका देना, ठीक है? यहाँ पे this is imperfect and the past participle does not change. Everything else is the same. So, with that said, can you conjugate manger for me in plus-que-parfait? Let's do it part by part. पहले बताओ past participle क्या होता है manger का? One question. Oui. Avoir. The formation. So do we conjugate like the auxiliary, then put the participle passé? So it's the subject plus auxiliary. Oui, exactly. जैसे वो what is the conjugation for अभी manger ही करना है ना, तो पहले manger का ही कर लेते हैं. manger का passé composé बताओ तुम क्या होता है? J'ai mangé. J'ai mangé, très bien. देखो मैं तुम्हें 3 पार्ट सिखाता हूँ इसमें. MANGE with an accent. ठीक है? अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स दिख रहे हैं कलर्स में. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जो ये रेड वाला पार्ट है ना, प्लस के पार्फे में बस वो चेंज होगा, बाकी सब सेम है. मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा था इतना रिवीजन के साथ कि ये जो चीज है दिस डिसाइड्स कि हम कौन से टेंस में है. अगर मैं इसको प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करता हूँ तो दिस इज पासे कॉम्पोजे. अगर मैं इसको फ्यूचर सैंपल में कॉन्जुगेट करता हूँ तो व्हिच टेंस इज इट? I'm sorry. Oh, future anterior. Yes. And if I now just learned कि अगर मैं इसको imperfect में कॉन्जुगेट करता हूँ, So this is PQP. yes, CQP, plus-que-parfait. ठीक है? Is that clear? Yes. Right. है भैया. तो तुम्हें एक और टेंस हम ऐसा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें कंडीशनल का है वो, ठीक है? इनफैक्ट 2 पढ़ेंगे, बट ये सब चेंजेस नहीं होंगे. पास्ट पार्टिसिपल कभी चेंज नहीं होगा. तो विद दैट साइड एक बार फटाफट कर लेते हैं कॉन्जुगेट. imperfect में कैसे कॉन्जुगेट करोगे manger को? सॉरी, plus-que-parfait में कैसे कॉन्जुगेट करोगे manger को? It will Je be avais j'avais mangé. mangé. Oui. Aishwarya, did you note the difference in the pronunciation? Yes, j'avais mangé. J'avais mangé. ठीक है? Why do we say that? Because it's a liaison. It's not a liaison. It's an apostrophe. Yeah, it's the same word essentially. ठीक है? J'avais mangé. Can Aishwarya tell us the conjugation for tu and il? Tu avais mangé, AVAIS. Oui, très bien. With the manger. Oui. And elle avait mangé, AVAIT. Oui, très bien. Okay. And Shalu, can you tell us the rest of the conjugations? Nous, vous, il plural. Yeah. Nous avions mangé. Like nous, Oui. then AVIONS, and manger in the past form. Vous aviez mangé. Vous, and then Oui. AVIEZ, and manger in the past form. Last is il zabe. Il ke baad it's AVAIENT, and then manger in the past form. है भैया. अब यहाँ पे देखो, याद है फ्यूचर सॉरी पास्ट
So एक composer में what was the difference between ether conjugation and avoir conjugation? In the sense, did it affect the past participle in some ways? Conjugation of ether affects the past participle. How does it affect Aishwarya? Any memories? Yes. Maybe, yeah, okay. So we put an extra e whenever we conjugated with ether Not in quite. pronominal verbs. No, not So quite. When do we put that E? Is that always the case with it? According to your statement, it sounds like it's always the case that we put an extra E. What does it depend on? it depends on the subject, And what things of the subject does it depend on? the feminine and the masculine, And and the group. the group. And what kind of groups? Um, if it's a masculine group or it's a feminine group. That's one part of it. What's the second part, Salu? Can you tell us? What are the Second part. factors on which I mean, what are the things that we add to past participle if the conjugation is with ether? I guess it's only depends on the gender and number of the subject only. Yes, the number is what Aishwarya was missing. So Aishwarya, Okay. so Yes. what do I mean by number? Shalu, can you elaborate? Like if the subject is singular or it's plural. Yes, exactly. And what do I do if it's plural? क्या special करना पड़ता है मेरे को? If it's if it's plural, we will add an s with the past participle, and also then it depends on gender also. Is it masculine plural or it's feminine plural? Yes, exactly. So Aishwarya, to correct you, we just don't add E, we also add S, but in दोनों का addition, it is dependent on the number and on the gender. If it's a male speaking, if it's a singular male speaking, we don't add anything at all. Hmm. Okay? So it's not always that we put a Hmm. E or an S, it's dependent on the subject. Okay? Yes. ओके सो यहाँ पे भी सेम चीज है ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे एथर का कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम रूल दैट वी जस्ट डिस्कस्ड प्लस-के-पार्फे में भी व्हेनेवर वी कॉन्जुगेट विद एथर ठीक है एंड द वर्ब्स आर द सेम एथर और अबोर वाले वर्ब्स चेंज नहीं होंगे ठीक है तो फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल दे हैड अराइव्ड बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग they had arrived before we started eating it satisfies the condition for plus-के-पार्फे yes no Yes. Yes. Aishwarya, any doubts? No. No doubts. Okay. No. Wait, I think एक second. Can you repeat the sentence? Uh, they had arrived when we started eating. They had Okay. arrived. Yeah. Okay, got it. No. Okay, so E1 is E2. यहाँ पे E1 is they had arrived. पहले पहुंच गए थे. And then we started eating. ठीक है? Yes. तो यहाँ Yes. पे which event qualifies for plus-के-पार्फे? E1. E1. Any doubts, Shalu, in that? Why? No, sir. है भैया. So अब देखो, what is the verb that is being used for E1? Arrive. Arrive. Yes. Yes. मान Yes. लो अब they were a group of female. They were a group of females who arrived. ठीक है तो कैसे करेंगे L कोई कंप्लीट कर सकता है मेरे लिए L L ete L arrive ete with an extra E and S. just a moment wait this is misbehaving for some reason but okay Just one thing. Can we just can we just full screen the iPad? is It's this coming on half of the screen right now. okay Yeah. L थे भी दिख रहा है क्या yes थे arrivé what is the past participle for arrivé
verb. We'll remove R and we'll put oxo ague on E. We. And what are the extra bits that we need to add in this case, and why? So one of you will tell me the extra Yes. bits, and the other will tell me why. E, Okay. And S. Yes. E and S. E Aishwarya, and S can you both. tell me why? Yes, that's correct. Why do Why? we? Because firstly, we are talking about the gender, so that's a female, that's why an E, Mhm. and the number, the plural, so an S. है भैया अब I have a question for you both. ठीक है, मान लो मैं कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूँ ऑफ लेट्स अज्यूम वी रिवर्स दीज इवेंट्स. अभी यहाँ पे खाना बाद में हो रहा था, पहुंचना पहले हो रहा था. लेट्स अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स. ठीक है, they had already eaten before someone else arrived. Maybe I don't care about that person, but अभी के लिए what I want is in this E1 E2 यहाँ पे जो verb है this is manger. What will I conjugate manger with? Hmm. That is happening before. They had already eaten before someone arrived. ठीक है? I think this Then will it's be avoir. also plus-que-parfait. Oui, plus-que-parfait and avoir. Yes, both of you are correct. So can you help me with the conjugation of this? Oui. Elles avaient mangé. Elle avait mangé. Manger. Can someone tell me what is the extra bits that we're going to put here? Nothing. Aishwarya? Yeah, nothing. Why? Because I think वो एत्र के साथ ही होता है. Exactly. Yes. Very good. ठीक है? तो confuse कर रहा था जानबूझ के. ठीक है? So that you understand. So now you're clear. Être और avoir की differences. Why are we doing what we are doing? Yes, sir. Yes. Très bien. अभी देखो यहाँ पे ना एक चीज लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ते हैं पहले, then we'll come back to this exercise. ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इन दी plus-que-parfait ऑल प्रोनोमिनल वर्ब्स आर कॉन्जुगेटेड. तो एथ वाले तो तुम्हें याद कर ऑलरेडी 3 टेस्ट पता है. व्हाट आर दी 3 टेस्ट? सो शैलो वी डिस्कस 3 टेस्ट इन द क्लास. फर्स्ट वन इज डॉक्टर मिसेस वॉन्डेट्रा. कल भी हमने रिवाइज किया था. ओके, Aishwarya, can Second you tell me the pronominal second and third verb one? and Third one, Aishwarya, any memories? I don't remember. The third one is the derivatives. ठीक है, तो Yeah. derivatives of the verbs in Dr. Mrs. Yes. Wondertrap, we use this eth for conjugation. ठीक है, तो that's what he's saying here. All pronominal, उसने अलग से एक रूल बना के बता दिया है. It's not something that we need already. This is something we already know. ठीक है, we don't need to pay attention to this. In plus-que-parfait, all pronominal verbs are conjugated with eth. यहाँ पे उसने सिर्फ एक प्रोनोमिनल वर्ब्स की बात की जो एथर से कॉन्जुगेट हो रहे हैं, एंड अग्री इन जेंडर एंड नंबर विद द सब्जेक्ट. दैट वी ऑलरेडी नो. जो भी एथर के साथ कॉन्जुगेट होता है, इट हैज टू अग्री विद द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. बढ़िया. मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ये है. जस्ट अ मोमेंट. यस, ये वाली लाइन पढ़ते हैं. शालू, कैन यू रीड दिस? यूज ऑफ द plus-que-parfait. use of the plus. Okay. Use of अभी the plus-que-parfait. As we mentioned earlier, the plus-que-parfait indicates a past action that happened before another past action started. The anteriority can be implied or stated. Therefore, the plus-que-parfait is often combined with the dependent clause that states this clearly. Aishwarya, can you read the second and third line again? This anteriority can be implied or stated. Therefore, the plus-que-parfait is often combined with dependent clause that states this clearly. Yes. Can someone explain this to me now? Now that we read it twice. जैसे I will give you an example in Hindi. उन्होंने पहले ही खाना खा लिया था. If I conjugate this tense in French,
this line in French. Are there two events? पहले तो मुझे ये बताओ, उन्होंने पहले ही खाना खा लिया था. Are there two events in this sentence? No. No. Aishwarya? Yes, No. no. What? No, no. Okay. Yeah, I said yes, no. They were not. Okay. Yeah. So यहाँ पे but are you getting a feeling that I should be using plus-que-parfait and not passé composé? उन्होंने पहले ही खाना खा लिया था. Correct. Why? Because पहले ही खा लिया था before the action. Before which action? वो तो action है ही नहीं. Hmm. कोई मतलब it is saying that खाला पहले ही खा लिया था, that's why. Yes. तो यहाँ पे ना देखो जो ये अच्छा, that anteriority है. yeah, the implied, that I think that is what it means here. Exactly. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंटीरियोरिटी है इट इज इम्प्लाइड. वी डोंट केयर उसके बाद क्या हुआ, एक एक्शन हुआ, ठीक है, खाना खाने के बाद व्हाटएवर हुआ, ये नॉट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. उससे पहले कुछ हुआ एंड दैट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब विद और दैट इज ऑलवेज डिस्क्राइब विद द प्लस-के-पार्फait. सो यहाँ पे ये बोल रहा है दिस एंटीरियोरिटी कैन बी इम्प्लाइड. द फर्स्ट केस दैट वी डिस्कस इज इम्प्लाइड और स्टेटेड. स्टेटेड का क्या मतलब होता है देन? मतलब वो एक्सप्लिसिटली दो इवेंट्स बताएं, ठीक है. जैसे उन्होंने पहले ही खाना खा लिया था जब हम पहुंचे उससे, तो द सेकंड एक्शन इज क्लियरली डिफाइंड हियर, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन है इनफैक्ट इस पैराग्राफ की, देयरफॉर the plus-que-parfait is often combined with a dependent clause that states this clearly. What is being stated clearly? किस चीज कि के उन्होंने सेटली? खाना खा लिया था पहले ही. नहीं, ये तो पहले Sorry. सेंटेंस में भी था, तो सेकंड सेंटेंस में ऐसा क्या क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं जो खाना खाने के बाद एक्शन हुआ है वो उसको भी क्लियरली मेंशन करता हूँ, ठीक है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन अदर वर्ड्स, ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम plus-que-parfait यूज करते हैं इट इज पॉसिबल कि एक ही एक्शन हो और वो एंटीरियोरिटी इम्प्लाइड हो, तो हमें उस केस में plus-que-parfait ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है. बट आइडियली हमें दो इवेंट्स देने चाहिए, वन मोर पास देन द अदर टू यूज दिस टेंस इज व्हाट दे आर सेइंग. Okay. एंड जो दूसरा पास्ट टेंस है वो इज गिवन इन अ डिपेंडेंट क्लॉज. व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज? सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है. अगर दो पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, तो द सेकंड पार्ट ऑन व्हिच दिस इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज. एंड दिस इज लिंक्ड विद सम वर्ड, सम कंजंक्शन और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, पढ़ते हैं. Je ne m'étais pas rendu compte, थोड़ा टफ एग्जांपल ले लिया उन्होंने सीधा ही, que j'étais malade. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais malade. अब इसमें ये वाला एग्जांपल छोड़ते हैं बिकॉज दिस इज यूजिंग imperfect एंड plus-que-parfait, ऑलरेडी अ वेरी टफ एग्जांपल. और उसमें plus-que-parfait के लिए भी इन्होंने टफ वर्ड उठाया है, सर ऑन रिपॉन्ड. लेट मी एक्सप्लेन इट विद समथिंग एल्स. हमने ऑलरेडी जो कंडीशंस डिस्कस की हैं वो सारी इस उसमें आ रही है, इस एग्जांपल में फिट हो सकती हैं. जहाँ पे फॉर एग्जांपल elle avait faim parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner. अब देखो यहाँ पे शी आवे फां का क्या मतलब होता है? शी वॉज हंग्री. अब देखो हंग्री है, क्या वो एक स्टेट ऑफ माइंड है ऐश्वर्या? इधर Yes, yes, I'm here. तो क्या शी वॉज हंग्री के लिए कैन आई यूज पासे कंपोजे? वॉज शी Uh, हंग्री फॉर ऐसे खत्म हो गई उसकी हंगर, या नहीं, नहीं. it was not limited, ठीक है. Hmm. The action Correct. was not limited in the past, इसलिए I can't use passé composé. eu fin is incorrect usage, ठीक है. eu fin is basically the passé composé of avoir faim. एक सेकेंड, ये लिख रहा हूँ मैं, लिखा. Hmm. दिस इज, इसका मतलब है एक फा नाम की चीज उसके पास थी एक सेकेंड के लिए एंड देन इट डिसअपियर्ड. But she was hungry
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हम ऐसी चीज़ों को हम परफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं इन द पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज शी हैड हंगर, अवेफा, अभी मैंने सेकेंड इवेंट तुम्हें डिस्क्राइब कर दिया है। Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner, उसको टाइम नहीं मिला था खाना खाने का, इस वजह से उसको भूख लगी थी। तो avoir is the verb that is being used इससे पहले वाले इवेंट के लिए, avoir le temps। ठीक है, उसको इन्होंने नेगेट भी कर दिया है। तो आर यू गेटिंग दिस? नहीं? Yes, sir. यस? Yes. थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन्होंने करा है, दैट्स इट, हाँ. अदरवाइज तो इट्स फाइन। या आई टोल्ड यू दी बोथ द हम्म। एग्जांपल्स आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बस यहाँ पे जो सिंपली ये बताना चाह रहे हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। देखो, in fact one of the best examples for anteriority. Elle était en retard car sa voiture blah 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 en panne. So tomber en panne is a very good expression, you should know this. This is a very long way of saying something in French. tomber en panne, क्या होता है tomber en panne? देखो, जो इसमें सेकेंड और थर्ड वर्ड है, दे आर ऐसे कैरी ओवर वो है, वर्ब इसमें सिर्फ tombe है, ठीक है। जैसे सर ऑन्द्र कौन थे, उसमें जो कौन है पीछे वाला वो कैरी ओवर है, वो बस चला आता है उठ के, जैसे का जैसे, वैसे का वैसे, ठीक है। ऐसे ही तोम्बे अम्पान में इट्स एन एक्सप्रेशन विच मीन्स खराब हो जाना, स्पेशली विद रिलेटेड टू व्हेन इट इज रिलेटेड टू व्हीकल्स। जब व्हीकल्स खराब हो जाते हैं तब हम बोलते हैं इट इज तोम्बे अम्पान। यस, नो, यस, Okay. नो, कुछ तो बोलो। यस। ओके, très bien। Yes, तो sir. यहाँ पे il était en retard car sa voiture dash en panne sur la route। तो तुम्हें एक्सप्रेशन पता है, tomber en panne is the verb that we are conjugating। यहाँ पे दो एक्शन है। Can someone tell me what are those two actions? He was I was late is already late. one action, and Sorry, yeah, And the second one? he was late the car because of broke down. the like vehicle is not. वही। एंड ऑन अ टाइमलाइन पास्ट में इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? कार वाला पहले आएगा एंड लेट वाला बाद में. यस, लेट वाला बाद में। इज दिस क्लियर ऐश्वर्या? व्हाट शैल वी डू? Yes. ओके, très bien। सो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, il était en retard, ठीक है। यहाँ पे he was late, était en retard। तो यहाँ पे मैंने यूज किया imperfect। इससे पहले जो हुआ है उसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? PQP. Plus प्लस का के पार्फे। Bruce Kavarfe, sorry. ओके, यस, क्लियर। प्लस के पार्फे में वर्ब कौन सा है? Tombe. tombe। is, can we do tombe. the test and see if it's an adverb verb or an adverb verb? What are the three tests? Please do it for Tombe. me. Tombe is, Dr. I think, Mrs. wanted from. Wondertron. Yes, so it So fails it'll the be first test। conjugated with extra. très bien, yes, so it will be conjugated with être। अब subject क्या है यहाँ पे? who fell in pan? Voiture. voiture। and what is the gender Voiture. of voiture? It's not voiture, Feminine. shalu, it's voiture, okay। Voiture. Yes. Voiture. uh, it's feminine, ठीक है। तो अब let's conjugate, now you know the gender, now you know the tense we are going to use। let's conjugate this। how will we conjugate tombe en pan? sa voiture। Sa voiture était ETAIT oui, tombe with an extra E.
Chalu, is there any doubt in this? No, sir. It's fine. Maybe, yeah. Okay. Now you're gonna do two different examples for me, okay? And I'll give you the number. ये सारे के सारे imperfect के साथ use क्यों किए हैं इन्होंने? Let me pick up another example from the first exercise. उसमें I think they don't have two events. That is why I brought you here. Yeah, they don't have it. So यहाँ पे सारे के सारे cases में they're asking us the question, the consign. Consign पता है क्या होता है? Consign. What is the consign of this No. exercise? Consign मतलब जो instructions होते हैं, ठीक है? Quelle est la consigne? Le consigne, désolé. Mettre au plus que parfait les verbes entre parenthèses. Put in PQP the verbs in parentheses. Yes. Okay, so we just have to conjugate with plus-que-parfait. यहाँ पे yes, maybe, yeah. And they are not concerned with the events happening before or after. They're just interested in teaching you this subject. Okay, you can do this. This is easy. You have to just decide whether it's ether or abo and put extra e in and ss accordingly. Okay. Let's just do this exercise only. Then there is no other way. I guess एक बार आगे देख लेते हैं. This. Okay, no worries. Okay, let's just do this. Okay. Third one is going to be done by Shwarya, and let's say ये वाला is going to be done by Shalu. You have to both give me your answers. Take your time. I'll be back in 1 minute. Just a moment. Okay. Okay. Are you guys done? Yes. Okay, Aishwarya, tell us. Elle a pensé que je. Que je ne Oui. avais N'avais. n'avais pas expliqué इसमें explique with an extra explique with an accent. do we put an extra e as well? You said? No, We don't. Why? because it's with avoir. Maybe, yeah. Okay. N'avais pas expliqué. Any doubts in this, Shalu? No, sir. Okay. Bien, are you done with the sixth one? Yes. It will be lorsque Lucy est arrivée, Paul Oui. est parti. Like EST, Paul A and party PARTI. ठीक है, that's one way of conjugating this. And what's the meaning of this sentence? देखो प्रॉब्लम इसमें ये है, हम क्योंकि plus-que-parfait पढ़ रहे हैं इसलिए तुम्हें पता है इस एक्सरसाइज में you have to use plus-que-parfait, right? But what you just used, Shalu, is passé composé. इससे क्या हुआ ना, it is not Passé incorrect. composé, The sixth sentence is not. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है. The only thing is इसका मतलब चेंज हो गया है. So Okay. this means when Lucy
arrived, when Yeah. Lucy had arrived. नहीं. नहीं. Lucy arrived. Paul, yes. That's Yes, Lucy also arrived. important. Then Lucy, Paul has I guess when Paul Lucy arrived, left. Paul left. So ये दोनों events, yes. What's the difference then? दोनों event एक साथ हुए होंगे. When Lucy arrived, Paul left. Hmm. ठीक है. But अगर हमें इसमें anteriority डालनी है, Paul तो पहले फिर ही चला गया था जब Lucy आई. तब कैसे करेंगे? Okay, then EST will change into ETAIS. Ete. ETAIS. Paul है वो. Paul is not sure to which Okay, is sorry. what is the subject? ETAIT. ETAIT. तो यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं. बस ये समझ लेना इन दोनों में इसका मतलब अलग होगा. Is this clear? Okay. Yes. I mean, in fact, the way you told us, it actually helped me clarify the definition a little more for you guys. So, are you clear on both the answers of sixth question? And what is the meaning yes. of Yes. idea? Okay. Now I'm fairly confident कि तुम्हें पता है plus-que-parfait कब यूज होता है. I expect to see it in your writings now. ठीक है? Because ऐसे sentences होंगे. देखो तुम्हें कोई आके बताएगा नहीं कि तुम्हें यहाँ पे plus-que-parfait यूज करना है. तो हम plus-que-parfait पढ़ रहे हैं तो तुम्हें पता है कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज में plus-que-parfait यूज होने वाला है. The only goal of this grammar book is to teach you how to write it. It's not going to tell you when to write it. ठीक है? So the learnings that you have to take from this lesson is, yes, of course, how to write it, but the बाहर जाओगे जब to write your own French, you have to think of these events. Think of two events. One happening before the other is the perfect place of putting plus-que-parfait. ठीक है? Plus-que-parfait. Yes or no? So Yes. just a little question Yes, sir. on the sixth the part where we conjugated Paul left with passé composé, right? So even if we put passé composé, that's not incorrect, right? Define incorrect, Aishwarya, for As me. in, matlab, this is the exercise. If we are trying to speak something, and if we put passé composé with passé composé, that won't be incorrect, right? That won't be incorrect technically, grammatically, yes, but the meaning of it changes. Okay. In this Okay. exercise, it will be incorrect because we've been told to Correct. do something else. ठीक है? It depends what we're trying to speak. If we're trying to speak something before in the past, then it will be incorrect. Exactly, yes. Okay, अगर got तुम it. बोलना चाहते हो कि लूसी पहले ही आ गया था बिफोर पॉल, आई पहले. मीन यू अंडरस्टैंड, Yes. पहले और दूसरे वाला, whoever was पहले whoever was बाद में, if you want to speak that and you write a पाख्ती, that is incorrect. और Okay. भी उल्टा, if you want to say दोनों चीजें साथ में हुई थी and you write एते पाख्ती, then it's incorrect. ठीक है. So incorrect is a little subjective. As to what you're trying to say. If you're trying to say something, you have to use a certain tense. If you're trying to say something else, you have to use a certain tense. Got it. That's what I was asking. Okay, I hope it is clear now. Okay. With that, I think we covered a lot of plus-que-parfait. Any doubts so far? Or kuch? Shalu, are you clear on everything? Yes, sir. Okay, let me share the tracker. Let me quit this. I'm not going to teach you from the tab now. And just give me 1 second. Okay. Are you guys able to see the tracker? Yes. So what we're going to do is, Yes, sir. let's do some listening. ठीक है? Headphones नहीं है तो लगा लो, नहीं तो turn up your volume. It's a short audio, very easy, not very tough. It's an A1 exercise according to this, but इसके levels पे मत जाना कभी भी. They are very misleading. तो A1 can be very P1. ये P1 level की exercise भी हो सकती है according to the exam, but यहाँ पे they classified it as A1. Should I play it?
Yes. Okay. You can play it. I don't know about Chalu. मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ. Let me know if Yes. it's audible. It's audible. Yes, it's It's audible. audible. Yeah. Le journal. En français facile. Elisabeth Borne, nommée première ministre en France, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. La nouvelle chef du gouvernement a dit qu'il fallait agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. What is happening in this audio? She's speaking so fast. Is that the case? No. I mean, the way she's pronouncing, I think it's happening like she's eating words. चीटिंग वर्ड देखो, ये रेडियो फ्रांस का ना ये प्रॉब्लम होता है. हिंदी में भी तुमने अगर रेडियो सुना होगा ना, तो यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रीडिंग इट फ्रॉम अ टेलीप्रॉम्प्टर. ठीक है. Hmm. एंड दैट काइंड ऑफ रीडिंग आउट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी एक्चुअली स्पीक, which is very मतलब हम बीच में वर्ड्स को स्ट्रेस करते हैं, we change the tone of things, we change the modality, सब होता है when we actually conversing with someone. But जैसे अभी मैंने बट थोड़ा जोर से बोला, that doesn't happen when you read it from a piece of paper or from a teleprompter. ठीक है. इसलिए radiophonic French जो है, which is used in the test audios a lot, ठीक है, it needs to be it needs some getting used to. ठीक है. So pay attention one more time. I will play this 2 or 3 times somewhere. तो जितना इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हो करो. देयर आर फ्यू नेम्स, 1 or 2 नेम्स. देयर इज सम इवेंट हैपनिंग एंड व्हाई इज दैट इवेंट हैपनिंग. ऐसी चीजें नोट करने की कोशिश करो. Le journal. En français facile. Elisabeth Borne, nommée première ministre en France, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. La nouvelle chef du gouvernement a dit qu'il fallait agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. क्या हुआ? I The guess एक name was न्यूज़पेपर का Elizabeth. नेम है. एक पर्सन का नेम न्यूज़पेपर है. का? I think it's about somebody standing up for the second time. The CM I could get. The Okay. CM poor, I think. Second year. Oui, okay. And एक the कहाँ name पे is बनी है जैसे? Elizabeth. Elizabeth. Okay, Elizabeth. très bien. Yes. What is the And other I guess information it's that the you could gather? first minister. Oui, très bien. Yes. So it's the première ministre. First ठीक है. minister जो 2 times. Yes. So basically ये प्राइम मिनिस्टर होता है. प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो शी इज Okay. बीन नेम्ड. अब Okay. अब तुम्हें 2 चीजें पता चल गई, पोजीशन पता चल गई, नाम पता चल गया, तो दे हैव बीन लिंक्ड. ठीक है. तो शी इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर. मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है. अब और इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियो में, यू हैव टू गैदर दैट. फिर से चला रहा हूँ. Le journal. En français facile. Elisabeth Borne, nommée première ministre en France, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. La nouvelle chef du gouvernement a dit qu'il fallait agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. I could gather chef, the gouvernement, I think that's Mhm. Oui, chef du gouvernement. Oui. and कौन? the last one was ecologic. So Ecologic. something difficult, I think. Défi. Défi is the word she Pass used. on the. Okay. So we have a lot of information, but in bits and pieces. Défi इकोलॉजिक. एक और वर्ड यूज किया था उसने डिस्क्राइब करने के लिए. इकोलॉजिक के साथ और क्या था? चलो ये नोट करना है इस बार. लास्ट बार चला रहे हैं, इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे. ठीक है. Okay.
Le journal. En français facile. Elisabeth Borne, nommée première ministre en France, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. La nouvelle chef du gouvernement a dit qu'il fallait agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. Any new thing? एक तो उसने बोला कि शी इज द वुमेन जो सेकंड टाइम लाइक विल फंक्शन एज अ न्यू शेफ ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक न्यू हेड ऑफ द गवर्नमेंट. She's एंड okay. Second इकोलॉजिक time के क्या हो रहा साथ है? इट वाज डेफी, लाइक इट्स गोइंग टू बी द Defi? सेकंड टाइम कि कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन रही है. Exactly. Yes, that's what she's saying. Okay, very good. And what's the last part? Defi? डेफी क्लिमाटिक, it was something like that. Defi Climatic. climatic. Yes. Climatic et écologique. Very good. So yes, those are the two words. Let's listen to this with the transcripts and I'll explain it to you. Le journal. En français facile. Elisabeth Borne, nommée première ministre en France, c'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. La nouvelle chef du gouvernement a dit qu'il fallait agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. अब देखो यहाँ पे ask me a tough words जो नहीं समझ में आए and इसका मतलब मेरे को बताओ. पहली लाइन का मतलब Elisabeth Borne, nommée première ministre en France. So this is Is Elizabeth nominated Borne. Prime Minister of France. Nommée, she's been named the Prime Minister in Yes. France. ठीक है? Okay. C'est la deuxième fois qu'une femme occupe cette fonction. It's the second time a female has like come or occupied this Position or function. Yeah. Yes, très bien. La nouvelle chef du gouvernement. देखो उसका premier ministre बोलने की बजाय उन्होंने क्या बोला उसका synonym? La nouvelle chef du gouvernement. Chef. ठीक है? Chef is the head of something. ये वो वाला chef नहीं है बनाने वाला, but this is chef मतलब in French is the highest position वाला बंदा. तो किसका chef? Du gouvernement. तो prime minister and the premier minister en France is the chef du gouvernement basically. La nouvelle मतलब the new chef du gouvernement. तो इसी की बात हो रही है अभी भी एलिजाबेथ बॉर्न की. ठीक है? आदि व्हाट टेंस इज दिस? passé composé. Passé Il composé. fallait agir. Oui. Il fallait agir. What tense is il fallait? This is imparfait. Imparfait. Très bien. Imparfait, हाँ. Oui, it's imparfait. And what's the verb being used यहाँ पे? Falloir. Falloir. More any idea वो क्या मतलब होता है उसका? It means Falloir that means to. she said it's necessary to act more fast or quick and more strong. Yes. उसके बाद भी पता Oui. चला. Okay, so it's about climate change. face au défi. Face au défi का क्या मतलब है? देखो face à plus quelque chose का मतलब when faced with something. And generally quelque chose is something related to problems. Face à problème, face au problème, face à défi. ठीक है? face au défi कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है? तो या défi यूज कर लो या problem यूज कर लो. face à plus le défi climatique et le défi écologique उसने चेंज कर दिया face au défi climatique et écologique. इसका मतलब है we are being faced with a lot of climatic and ecological challenges. Hence it's necessary that we agir का क्या मतलब होता है? To take action, act. ठीक है? To act more, to act faster and stronger. ठीक है? Yes, no? Yes. Yes. Très bien. Let's do the exercises. Elisabeth Borne est la nouvelle première ministre ou ministre de l'Intérieur? Premier Ministre.
Très bien. Et en France, une femme occupe ce poste pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Pour la deuxième fois. Deuxième fois, très bien. Elle veut agir vite pour l'écologie, la santé, le travail. L'écologie. L'écologie. ऐश्वर्या वापस बोलो इसको. L'écologie. Oui, l'écologie. ठीक है. apostrophe भूल जाया करो जब pronunciation करना होता है. ठीक Quel है. mot entendez-vous? एक बार वापस सुन लो. तुम्हें पता ही है, सारे के सारे बता दो. 5 आंसर है इसमें. कौन से वर्ड सुने थे इसमें हमने? Premier ministre, Premier fonction, शेफ. कौन सा वाला? chef. ऊपर वाला. हाँ, एक्चुअली यहाँ पे दूसरा वाला दोनों होगा. हैं. हाँ, दो I'll tell लाइन्स you. हैं. And then Agir. agir, Agir, Climat. climatique. climatique. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शेफ लिखा हुआ है ऊपर वाले ट्रांसक्रिप्ट में, विच इज गलत, क्योंकि इसका जो फेमिनिन फॉर्म होता है इट इज डबल एफ ई. ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में ला नूवेल शेफ सिंगल एफ था, इट हैज टू बी दिस वन. ठीक है, I think headline में mentioned CHEFF था. एग्जैक्टली, यस. Complétez ce résumé avec les mots entendus dans l'extrait. इसका क्या मतलब है? What is the consignment? What is the consigne? Complétez ce résumé. ये résumé है. résumé क्या होता है? किसी चीज का समरी. ठीक है, avec les mots entendus, with the words entendu, heard in the extract, in the audio extract. Heard. Elisabeth Borne est la nouvelle Premier. première ministre en France. Elle est la dash du gouvernement. Chef. Très bien. Chef. C'est la dash fois qu'une femme. Deuxième. Deuxième. Deuxième fois, Cette fonction. cette Ok, fonction, très bien. climat. Elle veut climat. s'occuper de. यहाँ पे do you understand this? s'occuper de का क्या मतलब होता है? It's a very important verb, याद रखना. You can note it down if you want. S'occuper de quelque chose. It means to take care of something. ठीक है? Je m'occupe. देखो इसका pronominal verb है, तो je के साथ क्या होगा? Me. ठीक है? Je m'occupe de mes parents car ils sont âgés. देखो ये sentence. Aishwarya, can you read this? Which one? जो चार्ट में लिखा है. Je m'occupe Oui. de mes parents car ils sont âgés. इसका मतलब? I am taking care of my parents. Oui. I am taking like it basically means I am taking care मतलब like खुद से of my parents Oui. because they are aging. Oui, très bien. And Shalu, can you tell me the meaning of the second one? Tu t'occupes de tes frères parce qu'ils sont jeunes. You take care of your brothers because they are young. Oui, très bien. तो ऐश्वर्या, yesterday you worked, ठीक है? तो ऐश्वर्या s'occuper. क्या गलत लिख दिया? S'occuper. अच्छा, just a minute. De son travail. Yeah. पढ़ो इसको. ऐश्वर्या s'occuper de son travail hier. इसका मतलब क्या है? एंड कौन सा टेंस यूज किया है मैंने? This is imperfect. Imperfect. क्योंकि were you doing that action for one small moment or for a long period of time? For a long period of time. So sad, but okay. Yes, ठीक है ऐश्वर्या. s'occuper de son travail hier. तो इसका क्या मतलब हुआ? बताओ. That I was working myself. You were taking care of your work yesterday. Yes. बस simply. Yes. Yeah. तो taking care of literally does not mean कि तुम किसी का ख्याल रख रहे हो. It means to manage something as well. ठीक है?
Can we put this as a false friend or not? बोल सकते हो occupy the doesn't mean occupy of, ठीक है? Yeah. ऐसे तो बहुत सारी चीजें डाली जाएंगी. Yes, you can put it as a false friend. And Shalu, can you read this? It doesn't Shalu make sense, but just read it. Shalu Wait, wait. s'occuper de son cours de français hier. What does this mean? Shalu She's took taking care care of of her French course her French course. yesterday. ठीक है? तो यहाँ पे भी मैंने parfait यूज किया है. ठीक है? तो तुम्हें एक्सप्रेशन याद हो गया? S'occuper de उसका मतलब होता है to take care of something or someone. Yes? Très bien. Right. Ok. यहाँ पे elle veut s'occuper de défis climatiques et écologiques. Now, can someone tell me what is the meaning of this? Elle veut s'occuper de She want to take care of the like défis. climatic and ecologic difficulties or problems. Oui. Très bien. Aishwarya, is that clear? Yes. Très bien. Ok. We pass. On pass. This is something we can do बाद में. This is not as important. So yes. Okay. They are asking us to just do masculine to feminine. We can do that later. Kabhi. You can do this at home if you'd like. Just a moment. कल हमने practice किया था. Actually, I wanted to share this. Okay. What is there to discuss? इसके बाद you don't have the writing homework being discussed today. So do you want to do some speaking? Let's do some speaking. ठीक है? Okay. Aishwarya, as-tu fait tes devoirs hier? As-tu fait tes devoirs hier? If you don't understand the question, ask me. Okay. This is, have you done the homework yesterday? Did you do the homework yesterday? Yes. Did you do the homework yesterday? Oui. So, no, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas is which tense? Oh, sorry. Sorry, this will be present. So, je ne, n'ai yeah, pas fait. n'ai pas fait. ठीक है? Je n'ai pas fait. पूरा करो. Je n'ai pas fait mon devoir. So this Mes is devoirs. mes devoirs hier. Très bien. Okay. Shall we discuss some of these yesterday? Okay. Yes. Next question to you, Aishwarya, will be que feras-tu ce weekend? Think of the response while I ask Shalu one question. Question is, que feras-tu ce weekend? Okay. So this will be in future, right? Yeah. Okay. Où habites-tu, Shalu? Est-ce que tu peux nous donner une explication de tes alentours? De tes alentours? Alentours is surroundings. Où habites-tu, Ella? Est-ce que tu peux nous expliquer tes alentours? Where do you live and what are your surroundings like? Can you describe? J'habite à Rohtak. Okay. And like surroundings in what way? Like what is there? What is your what is your neighborhood like? Do you have like parks, I don't know, buildings, voisins, or neighbors, dogs, I don't know, anything Okay. in your surroundings? Okay. Okay. So, j'habite à Rohtak. Maintenant, il y a plus, il y a plus appartements que maisons. Oui, ok. Il y a, Plus de appartements. il y a Plus d'appartements. beaucoup. Okay, plus d'appartements que maisons. So just I wanted to say that there are more than apartments than the houses. Oui, oui.
मैं टाइप कर रहा हूँ, you just speak. बोलो आगे. Okay. Il y a beaucoup de chiens dans Okay. tout la rue. Tout la rue. Dans toute la rue. Dans la rue बोलो, toute la rue का doesn't make any sense. In all the street doesn't make any sense in English as well. Like, So in the street. okay. Okay. Um, Complétez. Quoi il d'autre? fait beau ici. Quoi d'autre? Il fait beau ici. Ok. Il fait beau ici également. Et Ça quoi va. d'autre? Ça va? Hmm, il y a beaucoup Désolé. de marchés pour faire du shopping. Ok. Très bien. Et your next question will be then. Quand est-ce que tu as prévu? Non. Qu'est-ce que tu vas acheter la prochaine fois que tu vas aller faire du shopping? Qu'est-ce que tu veux acheter quand tu vas faire du shopping la prochaine fois? Okay? That's for you after Aishwarya response. Okay. Aishwarya, are you ready? Yes. Très bien. I These just wanted to ask you, I want to say it's the long weekend, so that should also be in future. Or if it's today, this is the long weekend, it can be in present as well. no, the next week. So next week can be in future. Il serait, whatever you want to say. Il sera. Okay, il Sara. So no, it's the long weekend. Il It is sera. going to be a long weekend. Oui, tell me. You have to tell me. That is why we So, practice. il Sara. Mhm. Long. Un long weekend. A long weekend. J'irai faire du shopping Ok. et compléterai Ok. mes recording pour le classe français. Enregistrement. Ok. Enregistrement. Enregistrement pour le classe français. Ok. Je vais terminer ou je vais compléter mes enregistrements. Ok. Okay, so recording is okay. Enregistrement. Yes. Enregistrement. Then, ok. Quoi d'autre est-ce que tu feras la week-end prochaine, la semaine prochaine? So the weekday. You're asking not the weekend. What I'm No. going to do the week. Okay, the No, whole week. No, the weekend. Are these the only two activities you're gonna do? Week. Ok, then disons-nous, Aishwarya, qu'est-ce que tu achèteras quand tu iras faire du shopping? Qu'est-ce que tu achèteras quand tu iras faire du shopping? What I'm going to buy when I go to shopping. When I will go to shopping, yes. I'm gonna pick your brains now that we've covered grammar. I'm gonna pick your brains every time, okay? J'achèterai. J'achèterai simply. Yes, j'achèterai des vêtements et pour so I have to say for my office. Okay. So pour mon bureau. pour mon bureau. Mhm. And I think that's it. बस इतना ही करे तो है. Okay. Ok. Je reviens vers toi. मतलब, I will come back to you. Et tu répondras à cette question
On a fait cette question. Oui. Que faisais-tu quand tu étais petite? Que faisais-tu quand tu étais petite? OK? Je reviens vers toi. Et Chalou, est-ce que tu es prête? Oui. OK. Can you just go back to the question once? Oui, je vais Yes, copier-coller yeah. Oh, désolé, c'est pas la question. Et c'est la question. Que faisais-tu quand tu étais petite? Chalou, quelle était ta question? Like what I bought when I went to shopping last time. C'est en français, s'il vous plaît. Uh, hmm, Qu'est-ce que tu qu'est-ce as acheté? qu'est-ce que tu Oui, oui, oui. as acheté quand tu es allé faire du shopping la prochaine fois? Actually, I asked you for the future, but okay. You can respond in present as well. Past as well, sorry. But okay. Oh yes, Tell us. prochaine is the next time. Yeah, It because I was asked you coming for the to future, my that's why. mind the like last time. No worries, no worries. Okay. Just respond So whatever you मैंने prepared. last time से बनाया है. Yes. La dernière fois quand j'étais Mhm, allée faire du shopping, j'ai mhm. acheté un nouveau haut et des chaussures. Nouveau quoi? Nouveau quoi? Actually, मैंने fait nouveau haut, like top, How do you say HAUT. top? Ah, ok, ok. O. O. ठीक है, nouveau O. Oh, Et quoi? yes. Quoi d'autre? Et des chaussures. 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 Sûr. C'est ça, chausseur. Okay. ठीक है? Sûr. Ok, très bien. Et Chaussures. est-ce que tu portes ces chaussures régulièrement? Est-ce que tu portes Oui. régulièrement ces chaussures? Où est-ce que tu portes ces Euh, chaussures? euh, ces chaussures, like you are asking ki do I like to wear it regularly? Où est-ce que tu portes ces chaussures? Where do you wear those shoes? Where? Where do you go and wear those shoes? I mean, where do you wear those shoes and go? Are those gym shoes? Are those travail wale shoes? Just like Aishwarya just told us. For What? une promenade. Ok, très bien. Expliquez. Okay, सर वन मोर थिंग मैंने जो अभी बताया था उसमें Mhm. मैंने प्लू का पार्फे और पासे कंपोजे That was लगाया correct. था तो वाज दैट करेक्ट? That's correct. Yes, that was correct. I did not correct you. That ठीक means है. it's correct. Yes. J'étais allé au shopping, blah blah Okay. blah, et j'ai acheté something. So you went there before you bought something, right? So that's correct. Very good use. Yes, yes. ठीक है. Okay, répétez votre question, s'il vous plaît. Expliquez où vous portez ces chaussures, où tu portes ces chaussures. Euh, quand quand je porte ces chaussures Mhm. tout le Oui. temps, tout le temps, comme je je suis allée pour faire du shopping ou Je je suis suis allé in the allée past. pour faire une promenade. Non? So did you used to wear it in the past or अभी भी पहनते हो?
If you अभी भी पहनते हो, then you have to use present. Can't use past. तो je porte is Okay. present, right? Je porte Okay. ces chaussures quand je vais. Oh, blah blah blah. Je vais. Present. Okay. ठीक है? जब मैं Okay. जाती हूँ तब मैं So, je पहनती हूँ. porte. तो ठीक है. wait. So, quand je vais pour faire du shopping ou je vais pour faire une promenade, Très bien. etc. Très bien. Ok. Etc. Ok. Ashwarya, are you ready? Est-ce que tu es prête? Que faisais-tu quand tu étais petite? Disons-nous. So, what I've put is quand j'étais petite, Mhm. je jouais souvent au basket avec mes amis. Ok. Aussi, jamais, Aussi jamais? like, Radio. Oui, oui. also I liked, so this will come after. Can you say, I Okay. don't understand. What are you trying to say? Je jamais aller à la Ok. jam, Jamais. yeah, jamais aller à la piscine Mhm. tous les samedis. That doesn't make any sense. You Oh, never went to the pool every Saturday? What do you no, want I to say? said I liked going to the pool every Saturday. जामे क्या है फिर इसमें? Uh, Jamais. yeah, sorry, jamais. ठीक है, जामे पता है क्या होता है? Yeah, That is never. yes, ठीक है, यहाँ पे jamais. jamais. तो jamais कौन से टेंस में यूज करोगे आप? Jamais. First वाले में Yes, and what tense is that? jamais. This is imparfait. I wrote it imperfect. I'm just telling you how to use imperfect because Yes, you used to like it. ठीक है? yes. So Jamais. yeah, I used imparfait only. Ok, très bien. Yeah. तो jamais Aller, à la piscine tous les samedis. Très bien. Et quoi d'autre? um, um, et je regardais Mhm. télévision Ok. uh, La télévision. Ok. dans le soir. Le soir, simply. We don't say in the evening. We Okay. say le soir. Le Je soir, regarde. Ok. après mon école, Ok. after the school. Très bien. Ok. Shalu, the next question I actually posted in the chat. Did you note? Où passais toutes tes vacances d'été quand tu étais enfant? Sorry, I forgot to tell you. You there? Shalu, are you there? Okay. Sorry, We I was on will. mute. I was speaking, but I was on mute. Nice. Où passais toutes tes Okay, vacances so d'été shall quand I tu étais start? enfant? Oui, oui. Vas-y. Oui. Quand j'étais enfant, j'allais à la montagne avec mes parents ou quelquefois nous allions à l'endroit euh, au, au endroit religieux. Aux endroits et religieux. Ok. Qui est or you can say qui est religieux, I guess. ये मैंने लिखा है चार्ट में. अब nous allions aux endroits religieux. ठीक है? Endroit is masculine, so we will put religieux. What does this mean? Nous allions. Nous allions. Nous allions. What tense is that, Iswarya? This is imparfait. Imperfect. So we used to go to religious places. Okay. Oui. Nous allions aux endroits religieux. Religieux, désolé. Ok. Quoi d'autre, Chalou? Uh,
C'est tout? So this much only. Okay, don't shorten your answer because you don't want to speak, okay? I hope you did this much only, and that's why it's a genuine answer. Okay, I will ask this question to both of you. Que fais-tu chaque matin avant de venir en classe? Que fais-tu chaque matin avant de venir en classe? What do you do every morning before going to class? Before coming to Coming class. to class. ठीक है? Très bien. We Répondez. just wake up. Oui, then say it. Say it in French. Um, It's possible that you do other things. You drink a coffee, you blah, blah, blah. Whatever. Just tell me. In French, of course. Okay, shall I start? Oui, oui. Bien sûr. Chaque matin, avant de venir en classe, je me brosse et je me douche. Puis je prends Ok. les fruits. Ok, très bien. Et c'est tout? बस क्लास से पहले पहले क्या करेंगे हम? Okay. It's one question, I have a question here. So this should be in present tense or what? So, did you used to do this in the past? Did this once in the past, or do you do this as a habitual action in the past It's and a now? habitual action. So if this question, so this question is tu fais, so this is present tense. So देखो habitual action जो है, it has to be of the past for it to be imperfect. Correct. ठीक है? If I do this right now as well, I can't use imperfect. Hmm. ठीक है? So if I used to do it in the past and I'm still continuing that action in the present, I can't use imperfect. Is what I'm trying to say. So if you are doing it in the present, simply use present. Okay. And this was one of the use cases for present tense. We use it for habitual actions. Hmm. If you go back to the grammar page. Okay. So Okay, I'll go ahead then. Chaque matin, avant de venir au classe, mhm. je me réveille, Réveil. je me réveille, et et j'ai J'ai. I have a glass of water. So Ok. Je prends. Je je prends. prends, yes, je prends une Verre d'eau. verre d'eau, and yes, I think that's it. हाथ से पहले पानी पी के आ जाते हो, ब्रश व्रश नहीं करते हो? अब वो शालू ने बोल दिया ना. तो you have to say it as well. तुम्हें भी तो practice करना है. बोलो. Je me brosse, Brosse. Brosse. brosse, Je me je me brosse. brosse, To be et more specific, you can say je me brosse les dents. ठीक है? okay, I je brush. me brosse les dents. Oui. Je prends une verre d'eau et je prends un verre d'eau. Just un verre. This is very confusing. Yes, it's un verre d'eau. ठीक है? Un verre d'eau. Okay, a glass of water, right? Yes. Une tasse et un verre. Une tasse क्या होता है? A cup is a tasse. ठीक है? I But think I'll go with the cup. okay. Une tasse d'eau then. ठीक है? Une tasse d'eau. Oui. Très bien. Ok. On va passer à notre question. As-tu déjà visité un autre pays? Lequel? As-tu déjà visité un autre pays? Lequel? Doubts? Is this question clear? Have you visited Yes, sir. another country? And lequel? Which one? Which one? As-tu déjà? Déjà is what? Already. Already. As-tu déjà visité un autre pays? Already. Si oui, lequel? Lequel? Oui, oui. Vas-y.
So this has to be only one sentence. You can describe the country if you'd like. Don't say just yes and no. Okay. What if I haven't? I have to make up. Same Maybe here. make up or just say no, but I have visited places in India, blah blah blah. Okay. So we can make up, right? Oui. Bien sûr. Vas-y. J'ai visité um, à, à Manali Ok, à Manali, la ça marche. dernière semaine. La Ok, dernière. ok. Um, how do I say it after? What do I say after? Like, what all did I do? Oui, Um, j'ai visité oui. um, J'ai visité I want to say the waterfall. la chute या फिर La chute. une chute अगर आप you don't specify the name, Hmm. you can say une chute. Une chute. Une chute दो, ठीक है. Et le marché. Le marché, ok. Um, As-tu mangé quelque chose au marché? As-tu acheté quelque chose au marché? oui, j'ai acheté. Tes vêtements? Non. Merci, Audio. Ok. J'ai acheté. सोचो क्या Uh, खरीदा था? भूल गए या sac, अ, small, a petite sac. साग Food, का कौन सा वाला? पिट्ठू बैग वाला या नहीं, छोटा वाला, like a wallet type. साकामा या और फिर अगर sac, वो इट वाज लिटरली अ वॉलेट तो इट्स अ hmm, portefeuille, ठीक है? portfolio. But I'm guessing it was a clutch or it's a Hmm, handbag, so it's a sakama. okay. What's pittu bag then? Sakama. Backpack. Yes, but in French. देखो इसमें पैटर्न देखो Hmm, साकामा मतलब हाथ वाला बैग. hmm. तो बैक वाला बैग कैसे होगा? साका. What's back? Do. Dos. दो Do. pas dos. It's दो. Do. साका दो. Pittu bag and then sakama is हाथ वाला. ठीक है? Très bien. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as acheté? Tu as acheté? That means I have bought it for others. No. No. Est-ce qu'il y a Did you buy? d'autres something else? Okay. No. No? Complété. पूरा sentence बोला करो. No, yes. No, je ne achetais pas. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Mhm. Um, uh, the je n'ai pas acheté. I did not buy anything else. quelque chose d'autre. Quelque chose D'autre. d'autre. ठीक है यहाँ पे देखो मैंने न pas जो लिखा है ना न pas surrounds the auxiliary in passé Mhm. तो n'est pas. N'ai ठीक है pas. quelque chose d'autre. Note this down, ok? Alright. Chalou, est-ce que tu peux nous dire si tu as déjà visité un autre pays et si oui, lequel? Ça va. Non, je n'ai pas visité un autre pays, mais j'ai Ok. visité beaucoup de villes célèbres de mon pays, comme Ok. Manali,
Shimla. Ce sont des villes à la montagne et Haridwar, Vrindavan, Chinpurni, ce sont des villes religieuses. Non, ici c'est religious. Pourquoi? Okay. Oh, wheel is Why? feminine, so that's why it's religious. Oui. Wait. Just a minute. What we're gonna do is इसके बाद we're gonna do that dialogue that we did yesterday. Shalu, we're gonna do it with Aishwarya today so that you get another practice and she also gets the practice of that. And you can practice your speaking. Okay, so Aishwarya, to give you a Okay. context, what we did yesterday was we did a dialogue between Hussein and Shalu because I actually sort of planned this for 4 people, but you will see 2 people repeating the same thing. That's okay. I'll replace your name and you and Okay. Shalu can do this. So what we're going to learn with this is the use case for future anterior and future sample. Okay. Okay? So you have to speak some. I'll only speak these 2 lines. इसके बाद I'll shut up. Then it's your turn. Okay? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le futur simple et le futur antérieur en français. Aishwarya, peux-tu nous commencer en nous donnant un exemple du futur simple? Oui, bien sûr. Je mangerai un pomme demain. Une pomme demain. Ok, très bien. Très bien. Le futur simple est utilisé pour décrire une action qui se passera dans le futur. Aishwarya, peux-tu nous donner un exemple avec le verbe partir? D'accord. 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 Nous partirons en Partirons. vacances la semaine prochaine. You have to correct your pronunciation for A. It's vacances. 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 ठीक है? D'accord, vacances. D'accord. Vacances. D'accord? Ok. Excellent. Passons maintenant au futur antérieur. Chalou, sais-tu quand nous utilisons le futur antérieur? Chalou, tu Oui, es au le muet? futur Oui. Ok. antérieur est utilisé pour décrire une action qui sera terminée avant une autre action future. Par exemple, quand tu arriveras, j'aurai déjà fini mes devoirs. यहाँ पे is the meaning of these sentences clear? All of you? Aishwarya? Any doubts यहाँ तक? No. Just stop me anywhere you don't understand anything, Okay. okay? Très bien. Oui, parfait. Chalou, peux-tu nous donner un exemple avec le verbe finir? Bien sûr, il aura fini de travailler avant que nous commencions notre réunion. Réunion. OK, très bien. Chalou. Maintenant, essayons un dialogue ensemble. OK? Je vais me taire. Je vais me taire. I will shut up. Aishwarya, c'est ton tour. C'est ton tour. Que ferais-tu ce week? Oh, this is my name only. This is Vishalu. No. This won't be Shalu. I actually planned it for 4 people now. So I replaced 2 people's names with one person. So you just say whatever is Okay. Que ferais-tu ce weekend? Je Fera. ce weekend. Fera tu ce weekend. Que feras-tu ce weekend? Je visiterai mes grands-parents à la campagne. Nous passerons tout le samedi ensemble. Et toi, Shalu, quels sont tes plans? Plan. OK. J'irai au parc avec mes amis. Nous jouerons au football et nous ferons un pique-nique. Et toi, Shalu, as-tu quelque chose de prévu? J'étudierai
pour l'examen de lundi. Je passerai tout le week-end à réviser mes cours de mathématiques et de sciences. Et toi, Aishwarya, que feras-tu dimanche? Any doubts so far, Aishwarya, in this? As-tu quelque chose de prévu? Do you understand this? No. What something this is Quelque chose de something is always, have you something planned? Have you something, okay. this Review, adjective? okay. Okay, planned. As-tu quelque chose de prévu? Do you have something which is already planned? Okay, and what does Shalu reply with? Je te dirai pour l'examen de lundi. I. Can you finish in English? What is the meaning of this? Je te dirai. Going to study. I will I will study. study. I Okay. will study Je for my passe. exam on Monday. Oui, très bien. Je passerai tout le week-end à réviser mes cours de mathématiques et de sciences. I will pass. I will spend. I will spend the weekend revising for my maths and science class. Très bien. Ok, Aishwarya, que feras-tu dimanche? Dimanche, je ferai Ferai sorry. Je ferai une randonnée ron- ron- randonnée randonnée en montagne avec ma famille. Nous partirons tout le matin et nous reviendrons en fin d'après-midi. en fin d'après-midi. En यहाँ fin पे वो- d'après-midi. Can you read this one? Famille. It's not No. famille. It's famille. I-double-L Famille. is here. Oh, yeah. Here Hindi वाला लिखा है ना. So, ठीक है. Yes. Aishwarya, can you say the next one? Oh, sorry. Ça a l'air amusant. Aishwarya, Oui. moi, je pense que je lirai Oui, je nou- lirai. nouveau livre dimanche après-midi. Je le commencerai après le déjeuner et je me détendrai toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, पैटर्न नोटिस करो, हमेशा ज के साथ ए आवाज आएगी। कोई भी वर्ब तुम फ्यूचर में कंजुगेट करो, इट हैज टू बी ए साउंड, ए पा आ। ओके, तू और इल के साथ हमेशा फ्यूचर में आ वाली साउंड होंगी। तू औरा, इल सेरा, तू सेरा, ठीक है। बट ज के साथ हमेशा serai, तू irai, je j'irai, और je commencerai, je me détendrai, ये सारे ए साउंड में एंड होता है, ठीक है, ज के साथ। Okay. यहाँ पे I'm hoping this is clear to you. Moi, je pense que je lirai un nouveau livre dimanche après-midi. I will read a new book. I will start it after lunch. And I will, what is the meaning of this? Je me détendrai toute la journée. This is the détente. Se détendre, ठीक है, se détendre means to rest. I will rest Okay, I will rest for the whole day, ठीक है. yes. Shalu? Oui. Quand vous serez tout détendu, j'aurai déjà fini ma course au parc et je préparerai peut-être un bon dîner pour ma famille. J'aime bien cuisiner les dimanches soirs. Quand vous viendrez étudier, j'aurai déjà révisé tous mes cours et je serai prête pour l'examen. Je pense même que je ferai quelques exercices supplémentaires pour être bien préparé. Très bien. Aishwarya, C'est continuez. super, Chalu. Quand nous aurons fini nos activités, nous retrouverons peut-être pour discuter de notre week-end. Weekend. De notre weekend. Euh, Pardon? Quand? Qu'en pensez-vous? Très bien.
Ok, continuez. We say Sethune bon idée. Nous pourrions nous retrouver dimanche soir et partager nos expériences. Très bien. Ok, यहाँ पे you have to understand the meaning. C'est super, Chalu, quand nous aurons fini nos activités. Quand nous aurons fini. कौन सा tense है, ऐश्वर्या? This is future antérieur. फ्यूचर antérieur. तो इवेंट 1 पहले हो रहा है, nous aurons fini यहाँ पे हो रहा है, देन nous retrouvons, ये वाला एक्शन यहाँ पे हो रहा है उसके बाद, ठीक है? nous retrouvons उसके बाद, nous retrouvons क्या होता है? Future simple. यस, बट ये कौन सा वर्ब है? So retrouver. This is pronominal verb. तो यहाँ पे क्या हुआ, nous सब्जेक्ट है, प्लस जब nous को मैंने से चेंज किया, वो भी nous बन गया, ठीक है? तो nous retrouverons, ये चेंज हुआ है, देखो, nous retrouvons, nous retrouverons, ठीक है? peut-être pour discuter de, एक चीज नोट करो, अभी सीख लो, अच्छा रहेगा। हमेशा फ्रेंच में, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस समथिंग। That means quelque chose, literally, na? Yes, discuss quelque chose, discuter quelque chose, but French में there is a preposition in between these two, discuter de quelque chose, ठीक है? याद रखना, यहाँ पे discuter de notre weekend, discuter notre weekend is incorrect in French. We will discuss about our weekend, in short. What I'm trying to say is, इसको बिना लगाए ये sentence is incorrect, ठीक है? Okay, so we cannot say discute quelque chose like discute notre weekend. We have to put Yeah. the. Yes, discuter de quelque chose हमेशा, ठीक है? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? What do you think about it? ठीक है? Shalu, continue. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrions nous retrouver, Oui. démontrer et partager nos expériences. Oui. I'm sorry, I'm Parfait. interrupting. Quand I nous have. nous retrouverons. Okay. Shalu, 1 minute. Sorry. Sorry. I am just saying that whatever we have with quelque chose, can we make a list of it? No? ऐसे लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। नहीं, Okay? मतलब basic like we're reading and then we're putting quelque chose, right? ये list we No. will have to make as we'll read along. Okay. No, can't be done. ऐसे Okay. exhaustive list में दे ही नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है, ठीक okay. है? ठीक है, okay. Try to make this list on a separate page जहाँ पे you note this. ठीक है? And when I say quelque chose, it can be anything, ठीक है? It doesn't have to be literally quelque chose वहाँ पे. ठीक है, okay. For example, I'll give an example. Je discute de la nouvelle quoi, tasse de thé que j'avais acheté hier, for exemple. Yeah. Je discute de la nouvelle tasse de thé que j'avais acheté hier. मतलब You're going to discute, discuss. not going to, I am discussing. I'm Yes, discussing you are about discussing the cup, about the new cup. that j'avais acheté hier. J'avais acheté is which tense? Imparfait. J'avais acheté. It is 2 parts. J'avais acheté. Plus-que-parfait. Plus-que-parfait. So पहले हुआ था वाला इवेंट, मैंने कल कप खरीदा था, मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूँ, ठीक है? और प्रेजेंट और उसके उसमें है इसलिए, ठीक है? या फिर ये acheté भी बोल सकता हूँ, she acheté hier, ठीक है? Okay. ओके, शालू कंटिन्यू है, खत्म करते हैं। Oui. Parfait. Quand nous nous retrouverons, j'aurai déjà fait un gâteau pour nous tous. Ça serait une belle façon de terminer le week-end. D'accord? C'est un plan. Quand nous nous retrouverons, j'aurai sûrement des questions. Plan. C'est un plan.
quand nous nous retrouverons, j'aurai sûrement des questions à vous poser sur les révisions. On pourra s'aider mutuellement. Mutuellement. OK. Mutuellement. Aishwarya, continuez. Mutuellement. Oui. Super. Alors, rendez-vous dimanche soir après nos activités. J'aurai aussi quelques histoires à raconter sur notre randonnée. 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 Oui, randonnée. Parfait. Samava. Sameva. Ça me va. Samava. À dimanche soir alors. OK. Ça me va. ये expression तुम Sama- अपने उसमें डाल लो, डिक्शनरी में, अपने vocabulary में. If someone asks you, is it fine by you? Is it okay with you if I blah blah blah? Is it okay if we blah blah blah? Are you liking this? Are you trying a new dress in the mall or when you're buying Bethmo, Aishwarya? And if you Yes. like something, you can say Samava. I like it. Samava. I'm liking it. ठीक है? कोई भी चीज if you are fine with it, you say Samava. It goes by me, it goes with me, something like that. Literally. But it means I'm fine with it. ठीक है? Yes. Okay, très bien. Shalu, you clear with this expression we discussed yesterday? Yes, sir. Ok, très bien. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va continuer la discussion. Et peut-être je vais discuter de conditionnel. Ok? Le chapitre Ça va. prochain. Euh, Est-ce que vous voulez faire un exercice d'écriture à la maison? Exercice d'écriture. Written exercise. Vous avez déjà un exercice à finir? You Oui. already have an exercise to finish. Est-ce que vous pouvez Oui. Yes. quand vous m'envoyerez cet exercice? Aujourd'hui, demain, le week-end prochain, Aujourd'hui pour moi. quand? Désolé. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Et Chalou, c'est quand vous allez m'envoyer Um, les uh, devoirs? aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou Ok, demain. pas de problème. Ok, bien sûr. Et on va continuer à la prochaine fois. Alors, Oui. merci Oui. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.